Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी होगी। आज हम बात करेंगे उस कंपनी की जिसने सेकेंडरी मार्केट में डेब्यू करा है। जी हां, जिस स्टॉक की, जिस कंपनी की आज लिस्टिंग हुई है, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। लिस्टिंग के बाद आमतौर पर मैनेजमेंट आउटलुक के बारे में, ट्रेजेक्टरी के बारे में यहां से बातचीत कर सकते हैं खुल के। तो चलिए आज जानेंगे। न्यूजेन के सीएमडी साहब दिवाकर निगम मेरे साथ जुड़ेंगे। आगे का आउटलुक कैसा है, यहाँ से फाइनेंशियल्स कैसे पैन आउट होंगे। लिस्टिंग ठंडी हुई है लेकिन बाजार उम्मीद के मुताबिक है। 3-4% के हफ्ते का पहला दिन और बेहद इंपॉर्टेंट हफ्ता है ये। क्यों ऐसा कह रहा हूं? बजट गुरुवार को अनाउंस होगा। निफ्टी की 10 कंपनीज इस हफ्ते अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। आज से बजट सत्र की शुरुआत। आज इकोनॉमिक सर्वे टेबल होता हुआ और बाजार आपकी स्क्रीन पर अचानक इस हेडलाइन पढ़ते पढ़ते मेरे ख्याल से एक उछाल आया है। अब दिन के फ्रेश हाइस की तरफ 1% की मजबूती के साथ सेंसेक्स निफ्टी कामकाज करते हुए फरवरी वायदा की बेहद स्ट्रॉन्ग शुरुआत। 450 पॉइंट सेंसेक्स में और निफ्टी में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के उछाल के साथ इस नई सीरीज का आगाज होता हुआ। लेकिन चलिए बाजार पर लौटूंगा और अब से कुछ ही देर बाद डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जो इकोनॉमिक सर्वे आज स्टेबल हुआ है तो वहां पे भी हमें जाना है। तो एक काम करते हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के सीएमडी मिस्टर दिवाकर निगम मेरे साथ जुड़ते हुए। निगम साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और कांग्रेचुलेशंस। अब तो सेकेंडरी मार्केट में डेब्यू होता हुआ आपका। अच्छा, अब जब लिस्टिंग हो गई है तो आप लोग मुझसे आउटलुक के बारे में, ट्रेजेक्टरी के बारे में बातचीत कर सकते हैं। पिछले 3 साल में इस कंपनी की आय में 20% साल दर साल की ग्रोथ, जो सीएजीआर ग्रोथ होती है, वो देखने को मिली है। क्या ये मोमेंटम यहां से सस्टेन होगा? क्या अगले नियर फ्यूचर या आने वाले कुछ सालों में 20% की ग्रोथ मान के चलो ये कंपनी डिलीवर कर पाएगी? बिल्कुल। देखिए, हम जिस फील्ड के अंदर हैं वो ग्रोइंग फील्ड है और सब लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये मार्केट ग्रो करता रहेगा। आपको जैसे मालूम है, हमने कहा था कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव करता है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं और बेनिफिट मिल रहा है उनको। सो वी थिंक ये ग्रोइंग मार्केट है और विल कंटिन्यू टू ग्रो। एंड इन आवर पहले जो फर्स्ट हाफ है, जो छमाही रिजल्ट है, उसके अंदर भी आवर ग्रोथ हैज़ बीन as predicted about 22-23%. I think we will continue to do that. अच्छा निगम साहब, जो दिक्कत है न्यूजेन को लेकर वो इसकी मार्जिन परफॉर्मेंस को लेकर है, जो कि बड़ी इरेटिक रही है और लगातार पिछले कुछ सालों से कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। FY13 में 25% पे खड़ी हुई थी, FY17 पे, FY16 पे गिरकर 12% के लेवल्स पे मार्जिन्स आ गए। क्यों इतना तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन? क्यों मार्जिन्स पे इतना तगड़ा दबाव? क्या ये प्राइसिंग प्रेशर है या आप अपने धंधे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसीलिए मार्जिन दबाव में? क्या वजह है सर? देखिए, इन 15-16 के अंदर हमने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया था। वो R&D में भी था और सेल्स एंड मार्केटिंग में था, जो हमने एक्सपेंशन किया यूएस के अंदर। सो जो हमारी टीम है यूएस के अंदर, जो सेल्स एंड वाली टीम है, उसके रिजल्ट अब आने दिखाई दे जाएंगे आपको। तो मार्जिन बिजनेस जो है उसके अंदर मार्जिन है, बिकॉज 50% ऑलमोस्ट 47% बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ लाइसेंस एंड ATS, विच इज़ ओनली R&D कॉस्ट होती है और दूसरी तरफ जो भी इनकम होती है इनकम होती है। इसके अंदर जो मार्जिन हैं वो 70-80% मार्जिन होते हैं। एंड जो दूसरा बिजनेस है वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज का है और वो भी हमारा जो है निश सर्विसेज हैं, स्पेशलाइज सर्विसेज हैं। वी डोंट डू जनरल पर्पस सर्विसेज, वी डू ओनली प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विसेज एंड वहाँ पर भी हमारे पास में खूब मार्जिन है। सो आई थिंक मार्जिन की प्रॉब्लम नहीं है। मार्जिन को हम किस तरह से स्पेंड किया हमने, वो वाला इशू वहाँ पर था। तो हमने R&D में करा, हमने इन्वेस्टमेंट करा, बट वो चीज़ें पूरी हो चुकी हैं एंड आई थिंक नाउ यूजुअली ग्रो करेंगे R&D भी और सेल्स एंड मार्केटिंग भी। सो द ग्रोथ विल बी देयर एंड वी विल बी बैक। तो जो बीच में चिंताएं थी, हाँ, जो आपका आईपीओ आया था तब कहा गया था मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, शायद कंपनी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है मैक्रो चेंजेस को लेकर, जो एनवायरनमेंट में होते हैं, जल्दी कोप अप अडॉप्ट नहीं कर पाती।
तो ये गलत है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन मैक्रो चैलेंजेस के चलते नहीं है, ये आपकी सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, है ना? जी, और हम इसको सबको राइट ऑफ एक्सपेंस कर देते हैं। हम इसका बहुत सारी कंपनियां होती हैं इसको जो होती है कैपिटलाइज करती हैं एंड देन स्लोली राइट ऑफ करती हैं। हम वैसा नहीं करते, हम बिल्कुल डायरेक्ट काम करते हैं, सीधे सीधे उसको एक्सपेंस कर देते हैं। अच्छा निगम साहब, ये बताएं, लास्ट टाइम जब आईपीओ के समय आप चैनल पे आए थे, मेरे से बातचीत कर रहे थे, तब आपने कहा था मार्जिन जल्दी बाउंस बैक करते हुए नजर आएंगे। तो FY18 ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर, इसकी पहली छमाही में आपने 6% के मार्जिन क्लॉक करें। ये साल किन लेवल्स पे कहां खत्म होगा मार्जिन के लिहाज से सर? ऐसे देखिए, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो हमारा बिजनेस है वो सीजनल होता है। तो पहला H1 40% के करीब होता है और जो H2 होता है वो करीब 60% होता है। और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो तो सैलरी है, ट्रैवल है, रेंट्स हैं, दे आर रेगुलर, सो दे वो तो वहीं के वहीं रहते हैं। तो ऑटोमेटिकली द सेकेंड हाफ के अंदर मार्जिन इंक्रीज होगा। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, जब मैं आईपीओ के बार बना रहा था, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपकी देख रहा था, FY13 के जो पीक मार्जिन लेवल थे 25% के, क्या वहां पर वापस पहुंचेंगे? अगर हां तो कब तक? आई थिंक यू आर बिल्कुल आप सही हैं, 2 से 3 साल के अंदर हम वहां पहुंच जाएंगे। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट की जो वर्स्ट था फाइनेंशियल्स के लिहाज से, मार्जिन्स के परफॉर्मेंस के लिहाज से, वो अब खत्म हो चुका है, दैट इज बिहाइंड अस। और यहां से मार्जिन्स एक्सपैंड होते हुए नजर आएंगे, बढ़ते हुए नजर आएंगे सर। ये गिवन लेके चलूं, मान के चलूं? बिल्कुल बढ़त देखते को मिलेगी। और सीधा क्वेश्चन है, अगर मुझे दिखाई देता है कि 40-50% ग्रोथ हो सकती है तो मैं फिर से इन्वेस्ट करूंगा। यू नो अभी 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 हमें बहुत ग्रो करना है ना। अभी तो हम, ये बिगिनिंग है इस कंपनी की, तो हमें बहुत ग्रो करना है और उसके लिए लॉन्ग वे टू गो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो मैं आपसे कॉन्स्टेंटली, अब तो आप लिस्टेड कंपनी होने वाले, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स पे आपसे बातचीत होना शुरू हो जाएगी अब तो आप क्लोजली ट्रैक करेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी पे बातचीत करेंगे। अच्छा, जब इंटरव्यू के टाइम आए थे सर आप आईपीओ में, तब आपने स्पेसिफिकली मेंशन करा था कि पहली छमाही किसी भी साल की 40% के रेवेन्यूज वहां से आते हैं और सेकेंड हाफ में रफली 60% के आसपास का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। क्योंकि आपने मेंशन करा था क्लाइंट्स अपने आईटी परचेजेस जो होते हैं ईयर एंड बजट्स के लिहाज से डिसाइड करते हैं, तो साल के एंड पे वो आमतौर पर डिसीजंस लिए जाते हैं। अब तो ये FY18 ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे खड़ा है सर। अब तो हम फरवरी के महीने में खड़े हुए हैं। ये पूरा साल कैसा पैन आउट हुआ? H2 के हालात कैसे रहे? हम आपको अच्छे रिजल्ट दिखाएंगे। पर थोड़ा ही समय रह गया है। तो पर बताएंगे नहीं? मुझे मना किया गया है। अच्छा, आपने बीच में कहा मार्जिन्स पे दबाव, मार्जिन्स पे कॉन्ट्रैक्शन की वजह थी कि यूएस में आप बड़ा एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, सेल्स मार्केटिंग को पुश देने की कोशिश थी। इस समय यूएस कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितना इन्वेस्टमेंट्स वहां पे किए हैं आपने, और कब तक उसका फायदा भुना पाएंगे सर? सीधे एट द मोमेंट अभी जो है यूएस जो है वो 26% है। आई थिंक 2-3 साल तक तो ये ऐसे ही रहेगा, बट उसके बाद यूएस मार्केट ग्रो करना शुरू करेगा। बिकॉज यूएस मार्केट के अंदर जो सेल हो रही हैं वो सैस बिजनेस में हैं, जिनके रियल रिजल्ट जो हैं वो बैक एंडेड होते हैं, तो बाद में दिखाई देते हैं। तो अब इफ यू सी हमारा जो सैस का रेवेन्यू निगम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बीच वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती हुई, जो आज इकोनॉमिक सर्वे टेबल करा गया, उस पर सीए साहब डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यन बोलना शुरू करने वाले हैं। तो अब सीधे वो करते हैं, वहां पर देखते हैं क्या चल रहा है। वेलकम टू प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर संजीव सन्याल, सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर अर्चना माथुर, सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर अरविंद सचदेवा, Economic Advisor Mr. Arun Kumar, Economic Advisor Mr. Anthony Syriac, Economic Advisor Shri P.K. Abdul Karim. Friends, first the CA will make a detailed presentation, after which the floor is open for questions. Please follow the points of order as usual. A humble request, please keep your mobile phones on a switch off or silent mode. Over to the Chief Economic Advisor.
Oh, okay. Can you hear me? Good afternoon, and thanks to everyone for, first of all, thanks to Frank. Thanks to all of you for braving the traffic. Of course, it gives me great pleasure in showing off this year's economic survey for 2017-18. Okay. So something like this, as you know, cannot be done by any one individual or a group of individuals. And I'm presenting this on behalf of a number of people, and I'd like to acknowledge some of them. My apologies, I'm going to miss some. In fact, if you look at the acknowledgements page or pages in the survey, it's really quite long, and I'm sure it should have been longer, so apologies. First of all, I'd like to thank the staff of the Economic Division, my colleagues who are sitting here, my officers of Team CEA, as we call it. I would also like to thank very much, the physical act of actually producing it. It takes a lot of effort. I would like to thank the coordinating unit, its head, and especially Aftab and Ashwini for really having seen the process very carefully. Lots of people who are not here have also contributed. Don't want to name all of them, but including some people in the US who came to contribute for this, to work for this. I'd like to thank them as well. I'd like to thank my colleagues who work with me, in the Ministry of Finance, especially the two that I work closest with, Dr. Hasmukh Adhya and Mr. Subhash Garg. I mean, one couldn't ask for better colleagues like that in the ministry to work with. Of course, I would love to thank my boss, the Honorable Finance Minister, without whom, of course, none of this could happen. His support, his guidance, the cover that he provides have just been amazing in making all these 4 surveys that we've done possible. So a very special thanks to him. Last but not least this year, I want to extend a special, very, very special thanks to a group of people who kind of don't get enough, I think, credit for the work that we do. In the last survey and in this survey, we've spoken a lot about how we use big data. And I'm going to show you this year as well. We've used a lot of big data to come up with new facts and evidence. But, we can work with big data only if we get big data. And we get big data, or we've got big data, thanks to numerous colleagues in government, the deputy secretaries, the undersecretaries, the joint secretaries, the directors, in their own quiet ways, they've been helping us enormously. And I'd like to thank 2 people in particular who are here. I want them to stand up, both for themselves, but also for who they represent. Mr. Nilendu Mishra and Mr. Prakash Kumar, please stand up. I'd like to thank, it's people like this who, with their generous time, support, and guidance, who make some of the work possible here. In fact, but for Mr. Kumar and his colleagues in GSTN, a lot of the work which I'm going to show you would not have been possible. Of course, the cover is pink. We just wanted to make sure that we too, in our own small way, contribute to, expressing our support to the movement in favor of women and women's empowerment. In fact, there's a whole chapter in the survey on gender. So with that, let me quickly get to the economic survey itself. This year we have 2 volumes. We've gone back to the tradition. Last year we did it over 2 cycles. I think it confused a lot of people, and therefore we've gone back to 2 volumes. Volume 2 is, of course, the review of what happened over the last year, and in Volume 1 we build upon that to do some in-depth analysis and research and come up with new policy ideas. Overview of this presentation, I'm going to take about 25 minutes and then leave the floor open to questions. Frank, is that a good way of proceeding? I need to judge whether all of you are alert and awake. I don't want to bore you too much. So the presentation, it's in 5 parts: achievements,
the analytical review, in particular, understanding the temporary decoupling of the Indian economy. That naturally leads to the outlook for 2017-18, the rest of the year, and the next year, and the policy agenda. If I have time, I want to highlight some of the exciting new research that we've done that's presented in Volume 1. And I want to conclude with some big and big thoughts, maybe big and hopeless thoughts, but big thoughts nevertheless. Okay, what are the major achievements this year? I think that I would single out 2 or 3 very prominent ones. The launch of the transformational GST at the stroke of the midnight hour on July 1st. I think what is really important to take away also is the fact, as the finance minister said the other day or yesterday, that not only was it launched, and for something of such scale, complexity and scope, there were bound to be teething challenges. And I think it's fair to say that one of the remarkable things was, the mid-course, the corrective, expeditious actions that were taken, which have led to a kind of stabilization of the GST. I mean, the direction is very good. The level is still below potential, should keep that in mind. But in terms of directionally, the economy seems to be picking up quite nicely, quite robustly, and that's what's happening now. So in terms of the short-term outlook, remember that growth is picking up partly because the impact, the temporary impact of demonetization and GST have dissipated. Corrective actions have taken. I think the government is injecting a fair amount of demand into the economy. And above all, I think that exports have picked up quite briskly in the last 3 quarters, apart from that dip that I showed you. If you look at that same export chart and look at the last 4 quarters, you will see that Indian growth is about manufacturing export growth is about 11.3%, which is very healthy and kind of broadly in line with the way the world economy is going. So exports are driving growth. The temporary factors are receding. Private investment going forward will depend a lot upon capacity utilization and the progress under the IBC. Consumption, I'm going to come back, is going to be a little bit challenged because of oil prices going forward. So the growth projection, which all of you have already seen, for 17-18, it's 6.75%. It's higher than the CSO's estimate, in large part because the CSO has itself acknowledged that they weren't able to fully take account of recent developments. So I don't think they would be at all, they would contest this projection in any way. 6.75 on the real, and also inflation is higher in the second half than the first half, which they weren't fully able to incorporate. We project nominal GDP growth this year for about 10.5%.